There's anybody who said all the children are welcome. Like every year, this year also I'm very happy to see all the children here. I like the innocent faces and the innocent of this company. और बच्चों के बड़ा तो सुकून मिलता है बच्चे थोड़े आसमान प्यार उत्साह बड़ा वादे है क्योंकि इन्होंने संसार जो गुमराह करने वाली शक्तियाँ उन्होंने आशा नहीं किया जिस वास्ते में एक दिन सच्चा प्यार और आत्मा में सारी ऐसा ही प्यार होता है अपने गुरु नाल भी उन्हें महान आत्मा बच्चों की तरह प्यार We can learn a lot from the children because they are the innocent souls and they have the innocent love for all the beings. This is because up until now they have not dealt with any forces of the world which are misleading and dividing our souls. And they have not been affected by the dirt of the world. That is why their love is very pure, very innocent, and they attract the attention of the masters. Masters have the same kind of love for all the souls, and they have the same kind of innocent and childlike love for their own masters, and that is why they are easily attracted by the innocent love of the souls. सानू पता ही है कि बच्चों ने माता पिता पूछते क्योंकि जब भगवान मन उन्होंने अंदर की हरकत पैदा है तो माता पिता को आपस ही बोलना शुरू कर दे बच्चा रोंदा है जाता है लेकिन जब माता इस तरह वहाँ करती है बच्चे की तरफ बच्चा सब कुछ टूटा हमारा भूल जाता है और
अपने माता पिता के गल लग जाता है। अगर असी भी इस गुरु नानक ने किया चारों प्रदेश के बहुत पिता गल याद है। अगर साढ़े नुक्स है ताकि साढ़ा पिता दसता है सत्संग थोड़े ऐड है नुक्स है, लेकिन असं गुस्से हो जाने हैं, बुरा मनाने हैं कि हाँ हाँ साडा है सानू क्यों दसिया। चाहिए सानू ये सी बच्चे वर्गा मन बनाते अपन बाਹਾਂ गुरु के सर पर लार दे और गुरु भी सानू अपने करो। We know that the naughty minds of children are awakened. They start doing the things which the parents do not like. And when the parents get upset, they spank the child, or they get upset, they spank or do like that to the children. And then the children will start weeping and crying. And after that, when the parents, either the mother or the father, when they stretch out their arms for the child, he forgets everything, all the spanking and all what the parents have done to him. And he comes and sits in the lap of the parents. In the same way, Guru Nanak Sahib says that just like the mother or the father spank the children, and afterwards when they stretch out their arms and they invite the child to come and sit in their lap, the child comes and sits there, forgetting all the spanking and the things which the parents have done to him. In the same way, when we are spanked by the masters and afterwards when the master invites us to sit in his lap, we should forget everything and come and sit in the lap of our father, our master. But usually what do we do? When the masters tell us about our faults in the satsang, when he spanks us through the satsang, when he tells us that we have this fault or that fault, at that time, instead of becoming like a child, we say that why did master spank us, why did master tell us about our faults, and then we get upset at him. But what should we do? We should forget all the spanking and we should forget all the spanking which we may get from the master. He is doing that only because of our own good. He is telling us about our faults because he wants us to remove those faults. We should not get upset with the master. When he lovingly invites us to sit in his lap, we should forget everything like this child, like the children, and we should come and sit in his lap.
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੂੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ
ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ। The bhajans of the children are very sweet. I always like very much being in the company of the dear children because they are the innocent souls and their love is very strong. I hope that the parents will also attend to the responsibilities and with all their love and affection they will take good care of them.
Bande
बन के आया। सिमरन भजन राम खाई, सारमा दिए सारे चुड़वाई। सिमरन भजन राम खाई, सारमा दिए सारे चुड़वाई। नाम जाप कराया, बंदा बन के आया। बंदा बन के आया, रब बंदा बन के आया। बंदा बन के आया, रब बंदा बन के आया। अजायब कहेगा नाम कमाई, कि माला होए आपे प्रभु आई। अजायब कहेगा नाम कमाई, कि माला होए आपे प्रभु आई। साचा सुख बचाया, जब बंदा बन के आया। बंदा बन के आया, रब बंदा बन के आया। बंदा बन के आया, रब बंदा बन के आया। बड़ा अच्छा बच्चों में प्यारा, बड़े अच्छे भजन। आशा पालो कि बच्चों के अंदर इसी तरह गुरु प्यार का उत्साह माता पिता पैदा कर। The love of children is very good. The bhajans which they sang were very good. I hope that the parents will continue inspiring them to develop love for the master in their hearts like this. Nosotros esperamos de ti, bendiciones imploramos, nuestros corazones sedientos están, de amor, de amor, de amor hacia ti, Santi, 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 jubilosos esperamos, de ti, de ti, de ti. Bendiciones imploramos, nuestros corazones sedientos están, de amor, de amor, de amor hacia ti, Santi, 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 jubilosos esperamos, de ti, de ti, de ti, bendiciones imploramos, nuestros corazones sedientos están, de amor, de amor, de amor hacia ti, Santi, Santi. हाँ, कोलंबिया में बच्चे हैं, बड़ा अच्छा। This bhajan of the Colombian children is also very good. Guru
दुख विदारियो जो मांगे ठाकुरे अपने थे सोई सोई देवे जो मांगे ठाकुरे अपने थे सोई सोई देवे भजन राखे गुरु गोविंद
Graciela and Dr. Duque, you should also sing a bhajan. You should sing a bhajan.
सतगुरु प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे, मारे मारे तेरे दर ते पुकारे। सतगुरु प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे, मारे मारे तेरे दर से पुकारे। मेरे गुरु जी मेरा गाएगा जोड़ना, तेरे बाजो दुनिया दे मेरा कोई मोड़ना। तेरे गुरु जी मेरा गाएगा जोड़ना, तेरे बाजो दुनिया दे मेरा कोई मोड़ना। सतगुरु प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे, मारे मारे तेरे दर ते पुकारे। सतगुरु प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे, मारे मारे तेरे दर ते पुकारे। शरणा में तेरी आया मैनू दुखराई ना, दुख में बतेरे पाए और तड़पाई ना। शरण तेरी आया मैनू दुखराई ना, दुख में बतेरे पाए और तड़पाई ना। सतगुरु प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे, मारे मारे तेरे दर ते पुकारे। सतगुरु प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे, मारे मारे तेरे दर ते पुकारे। दुख नाल कापिया नू दिल में अठार दे, सतगुरु प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे। सुख नाल कापिया नू दिल में अठार दे, सतगुरु प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे। सतगुरु प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे, मारे मारे तेरे दर ते पुकारे। सतगुरु प्यारे मेरी जिंदगी सवार दे, मारे मारे तेरे दर ते पुकारे। कृपाल प्यारे आ, और
I get a lot of happiness from the children's satsang because they are the innocent souls. Just like the adults satsang, the children's satsang is also becoming successful. ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। I am very pleased with the children because now they also sit like the adults, very careful and without making any noise. ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। When I had gone to the first school, the parents had not taught their children such like discipline, and they used to understand a very great difficulty for the children. ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਅਦ में भी दुनिया खाई करोनिया ने सत्संग बच्चों ने चलाए हुए है, उस दिन तो लेके अज तक बच्चे बहुत अनुशासन च है और मैंने वध तो वध खुशी है। Even though the children do not get that much time like the adult satsang, but still ever since we started having the children's satsang, after the tours also people have started doing the satsang for the children and they have been enjoying it a lot. They are learning to be disciplined and I am very pleased with them. और ये भी जान के खुशी है कि माता पिता अपने बच्चों को इतने देते हैं और बच्चों को मौका मिल जाता है, नहीं तो बच्चों को राजस्थान ले जाने का मौका नहीं मिलता। अच्छी गल है कि इतने आके आपका फायदा उठाते हैं। It is very good that the parents bring their children here and that gives them an opportunity to be with the master, because you know that in Rajasthan they are not allowed to go, so it is good that they can come here with their parents.
आजा पिया रे सतगुरु आजा अपनी सूरत में आजा आजा पिया रे सतगुरु आजा अपनी सूरत में आजा। हर जान रागे गुरु
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਜਦ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I'm very pleased that all the parents took very good care of their children. In the satsang we did not have any difficulty, and I hope that whenever they will get another opportunity to bring their children here, they will maintain the same discipline here because it is very important. और माता पिता का बच्चों को बहुत असर करना है। अगर माता पिता खुद अनुशासन में जोड़ेंगे बच्चों को भी उन्होंने सुख मिलनी है। अगर माता पिता अपना भजन रियाज कर दिया सत्संग अंदर जाते हैं तो बच्चों के दिल अंदर भी उसे उत्साह बने रहेंगे। The parents have a great effect on the children. If the parents themselves are disciplined, it inspires the children also to be in the discipline. And if the parents are going in the satsang, they are doing their meditation, and if they are good, that inspires their children also to go to the satsang and to sit for the meditation. Pleased with their enthusiasm. All these bhajans which are written have a lot of yearning in them, and there are some bhajans which were sung in the presence in front of Master Kripal. Hearing those bhajans, Master Kripal Singh Ji also used to feel a lot of yearning, and he also used to like those bhajans very much. प्यारे वैरागी आत्मा ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਰਾਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਪਰ ਇਹ ਦਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਅੰਦਰ ਰੜਕਦਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਡਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਭਿਆ ਰੜਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਮਲਾਪ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਹੰਝੂ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਦਿਲ ਤਪਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਲਾਪ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੱਝਾ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Dear ones, only the yearning soul knows the value of the pain of separation. Only he knows that what yearning really is. Even though it may sound a very small word, yearning and the pain of separation are very small words, but only those who have been separated from their beloved and only those who have experienced this pain of separation, they know that how valuable that is and what they get from
having this kind of yearning and the pain of separation. Because the beloved children of God, the beloved disciples of the Almighty Master, they always say that, "O Lord, bless us with the pain of separation so that we may always have yearning for you. It does not matter whether you meet us or not, but at least give us this boon, give us this gift of the pain of separation, so that in your separation we may go on remembering you, we may go on shedding the tears." And dear ones, those who have experienced this pain of separation, only they know the value of it, and only they can take advantage of it. We people do not realize the value of having the yearning, and we people do not know that how valuable the pain of separation is. You know that as long as we are separated from Him, and we have the yearning and we feel the pain of separation from Him, our hearts do not cease, do not stop from being heated up. And that Almighty One also, when He sees our yearning, when He sees that we are in the pain of separation, we are feeling the pain of separation, He also cannot resist. He opens His door and He cools down our heated hearts. बोल भी प्रीतम बोल संसार है, जिंदगी लाचार है, आओ गिरपाल जी, तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार है। झूठा संसार है, जिंदगी लाचार है, आओ गिरपाल जी, तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार है। मेरे दाता जी गुनाहगार असी, साडे कागज ना खोलवे, कागज ना खोलवे। मेरे दाता जी गुनाहगार असी, साडे कागज ना खोलवे, कागज ना खोलवे। तेरी मझदार है, कर दयो पार है, आओ गिरपाल जी, तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार है। झूठा संसार है, जिंदगी लाचार है, आओ गिरपाल जी, तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार है। आओ प्यारे सुन लो बेनती, सुन लो बेनती। आओ प्यारे सुन लो बेनती, सुन लो बेनती। सच्चा तेरा प्यार है, तेरा ही आधार है, आओ गिरपाल जी, तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार है। झूठा संसार है, जिंदगी लाचार है, आओ गिरपाल जी, तेरी इंतजार है, तेरी इंतजार है। असी हाँ मैले सानू उजल कर दे, उजल कर दे। असी हाँ मैले सानू उजल कर दे, उजल कर दे। करना दीदार है, रूह शर्मसार है, आओ गिरपाल जी, तेरी इंतजार है,
बख्शिंदो तुसी बख्शो दाताजी तुसी बख्शिंदो तुसी बख्शिंदो अजैब दी पुकार है हर तरह की तार है आओ गिरबार जी तेरी इंतजार है तेरी इंतजार है झूठा संसार है जिंदगी लाचार है आओ गिरबार जी तेरी इंतजार है तेरी इंतजार है Now all of you those who will go for the seva and children please leave the hall and the other devas should sit for the meditation.